Hello guys, good evening all of you. How are you all? I hope all are good. Friends, today I went to my school. I am Hindi teacher. I teach in Bangalore, one school, small school, in state board. So today I went to school. Uh, After assembly, one of my child, he is telling me, today, ma'am, I'll go for Chhat Puja at 3 o'clock. Then I felt bad. Why? Because of I felt something, no, small child, first standard children, because I am his class teacher, no. So cute, no. Some children are very cute. Everything they'll clearly, no. Whatever they will have, no. Everything they'll clearly. And he told me nicely after assembly. He told me, ma'am, shall I go for Chhat Puja uh, in the evening, 3 o'clock? So I felt bad because of no holiday. So I am thinking today full day, no. I was thinking, then after coming to my school, no, I thought that I'll make my video. So new content, no, so that's why I made. So I felt very bad in school, no, in Bangalore, in Karnataka. No holidays. Why? I don't know. Why no holiday? This is national holiday because I am seeing from childhood, no, there is holiday in our school also. There was holiday. I am from Ranchi, Jharkhand. So now I know very well about Chhat Puja. Ganga Maiya, no, they will celebrate nicely. And in Jharkhand, Ranchi, no, in Bihar, UP, they will have 1 week holidays. I heard like that. I know maybe nowadays more also, but 1 week they will give holidays. But here no holiday. I don't know why. So today I was thinking full day, no holiday in Bangalore. Why? This is national holiday. In mobile calendar also there is Chhat Puja. Then why no holiday? This is not good, no? Chhat Puja, they should give holiday. I am not forcing that why they will not give and you should give holiday. But I am seeing from childhood this there will be holiday in everywhere in North India and in our place, our Jharkhand also. I am working here from 11 years, now 12 years running now. So I never seen Chhat Puja holiday. Yes, really, I never seen in this Bangalore. I have taught also in ICC board. There was also no holidays in 11 years. I have taught in ICC board, and I am teaching here state board also. Oh, now going on. Half 6 months going on, so there is also not holiday here, also not holiday. So today I was feeling bad. That boy told me, no ma'am, today I want to go for Chat Puja. I don't know where is Chat Puja, but I can see somewhere they will celebrate, but I don't know where they will celebrate. But I was feeling bad for them. Why no holiday? They should get holiday in Bangalore. Bangalore government or what? Who will not give? I don't know. Why they don't give holidays? They should give holiday. This is national holiday. In mobile also there is holiday written. Chhat Puja. Every festival they'll give holiday, but in Chhat Puja no holiday. This is not good, no? Every people, Hindu, Muslims, Eid, Ramzan, Christmas, Easter, and Makar Sankranti, Karnataka Rajyotsava, main festival here, and so many festivals are there. And Chhat Puja, why no holiday? I am asking the audience. There is no holiday in Bangalore, in Karnataka. What do you feel? If I am wrong, I am saying means there is no holiday. आप क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर छठ पूजा के लिए छुट्टी मिलना चाहिए कि नहीं, बताइए। मुझे तो लगता है कि छुट्टी मिलना चाहिए, सबके लिए मिलता है। इसके लिए क्यों नहीं मिलना चाहिए छठ पूजा वालों के लिए जो सेलिब्रेट करते हैं? अपना अपना धर्म होता है। इसमें मोबाइल में कैलेंडर में लिखा हुआ है कि छठ पूजा है, वहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबके लिए फर्स्ट फेस्टिवल का ये छठ पूजा के लिए भी छुट्टी मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन बेंगलोर में नहीं मिलता है।
मैं बैंगलोर के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ। यहाँ का नियम क्या है नहीं मालूम, ICC बोर्ड का नियम क्या है नहीं मुझे नहीं मालूम, स्टेट बोर्ड का नियम क्या है मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट हॉलीडेज, वाई दे डिडंट गिव मी। माई क्वेश्चन इज वाई दे डोंट गिव हॉलीडेज इन छठ पूजा। Everybody get holiday, but why Chhat Puja? For Biharis, no holidays. Why? This is not good. No, UP Biharis they will celebrate. I am from Jharkhand. I am from Ranchi, but I don't celebrate. I am Christian, but I don't celebrate. But my question is, why there is no holiday for Chhat Puja? Every people will celebrate in North India. Even in Bangalore also there will be there. So many people are staying here and they are settled also. They are staying in Bangalore, Karnataka. But they should give holiday. मेरे ख्याल से देना चाहिए उनको हॉलीडे। मुझे बहुत बुरा लगा, आज मेरा बच्चा पूछ रहा है कि मैम मुझे 3 बजे मुझे छठ पूजा के लिए जाना है। तो मैम बोले कि बेटा ठीक है बेटा, मैं तुम चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद मैं सोच रही थी, दिन भर मैं सोच रही थी कि छठ पूजा छुट्टी क्यों नहीं है यहाँ पर स्कूल में। इस स्कूल में क्यों नहीं है, और भी स्कूल में नहीं मिलता है छुट्टी। ICC बोर्ड में मैंने पढ़ाया, कभी नहीं देखा हॉलीडेज़। स्टेट बोर्ड में मैं देख रही हूँ अभी, कभी मतलब इसके लिए छुट्टी नहीं मिल रहा है, मैं पहली बार देख रही हूँ। फिर CBSE बोर्ड में मुझे पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है, मुझे उतना पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है वहाँ का। लेकिन मिलना चाहिए, सबके लिए मिलता है तो इसके लिए क्यों नहीं मिलना चाहिए दोस्तों, आप बताइए। नहीं मिलना चाहिए क्या? छठ पूजा के लिए भी मिलना चाहिए है ना, मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है, आप मेरे कमेंट में बताइए ज़रूर है ना। छठ पूजा जो बेंगलोर में रहते हैं वो लोग सब बताएंगे मुझे, इन मैसेज में सबको बताएंगे। यू कैन मैसेज मी, टाइप मी एनीवन दैट छठ पूजा के छुट्टी मिलना चाहिए कि नहीं। मैं किसी को नहीं गाली दे रही हूँ, किसी को नहीं हर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ख़राब लगा। आज बच्चा मेरा बोला, मेरा क्लास का बच्चा बोला कि मैं आज 3 बजे जाऊँगा। मैं बोली बेटा किस लिए जा रहा है, तो वो बोला बेचारा बच्चा छठ पूजा के लिए जा रहा है। तो मुझे बहुत दुख लगा, मुझे रोना आ गया। मैं दिन भर सोच रही थी, मुझे ख़राब लगा, उदास फील हो रहा था दिन भर, क्योंकि छठ पूजा के लिए छुट्टी क्यों नहीं मिलता है मुझे पता नहीं। इस बेंगलोर में या इस कर्नाटका में क्यों नहीं मिलता है, कनाडियन लोग क्यों नहीं देता है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं देता है मुझे उनसे क्वेश्चन है कि छठ पूजा कैलेंडर में लिखा हुआ है, सब बहुत सारा कैलेंडर में लिखा हुआ है, मोबाइल कैलेंडर में लिखा हुआ है, बहुत सारा जगह में लिखा, कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं है। समवेयर इन कैलेंडर देयर इज रिटन छठ पूजा इज देयर, एंड मोबाइल ऑल्सो, इन माई मोबाइल ऑल्सो देयर इज छठ पूजा. But there is not given in holiday, means there is not given holiday in my school also. There is there, no, there is not mentioned Chhat Puja. This is not good, no. There should be mentioned holiday also, should be mentioned. I don't know why they are not given, principles not given. I don't have any problem. I don't have a problem why they are not giving, but my question is why it is comparison with Chhat Puja. Everybody will get holiday, no, for all the festivals. My question is that why it is not given for holiday in Bangalore or Karnataka. So my question is this. So audience also, I would like to ask you, can you message me, do you want holiday in Chhat Puja? आप SMS कर सकते हैं मेरा कमेंट में, ओके। Thank you. Sorry if I wrong, if I'm hurting anybody, principal and school management or anyone, government also. I'm not hurting anybody, but today my son told, no, means my boy told me in class, no, after assembly day, he told me, ma'am, I want to go for Chhat Puja. See, I feel very bad. From that time I was thinking, why they don't give holiday for them? They should give holiday for them also. Because everybody give holiday for every festival, they'll give holiday. Why not for Chhat Puja? I felt very bad. That's why I'm making here video. Sorry guys. Thank you.